Assalamualaikum class, I hope you all are doing well. Stay safe, stay home. So the homework which I am going to give you today is from the chapter Measurement of Physical Quantities. Long question number 2. What is meniscus? First you are going to write the definition. A meniscus is a curve in the surface of a molecular substance, water or oil, etc., when it touches another material. Another definition is when a liquid is poured into the cylinder, the surface of a liquid curves upward at the point where it touches the inside of a cylinder. This curvature is called meniscus. So what they are trying to say, they are saying a curved surface, you can see from the diagram, a curved surface is formed at the liquid surface in a narrow tube. You can see from here, this is a concave meniscus, this is a convex meniscus. Okay, so what are the type of meniscus? A meniscus can be concave or convex. Okay, then you are going to write the definition of concave or convex meniscus. A concave meniscus occur when the particle of a liquid are more strongly attached to the container than to each other, causing the liquid to climb the wall of a container. A convex meniscus occur when the particle in a liquid have a stronger attraction to each other than to the material of the container. Okay, I hope you get it. So what you are going to write first, you will write the two definition of meniscus. Then you will tell there are two type of meniscus, concave or convex, their definitions, and then you will make the diagrams as I have made them. So you will write exactly the same in your notebooks. ओके, सो मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस वो सरफेस, एक बाउंड्री होती है जब भी आप लिक्विड को पोर करते हो किसी भी नैरो कंटेनर में, तो वो या तो सी शेप कनकेव में बनाता है या कन्वेक्स में बनाता है, और इसी को मेनिस्कस कहते हैं. You can take screenshot or you can write by pausing the video. Okay, so the next question is from unit 2 is give in detail the procedure of measuring the volume of a liquid by reading correct meniscus in the measuring cylinder. So they are asking what is the procedure to measure the volume of a liquid if you read meniscus correct. So first of all, you will tell what is measuring cylinder. A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. It is made up of transparent plastic or glass which has a vertical scale in a millimeter और क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एक मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया हुआ है कि एक सिलेंडर होता है मेजरिंग सिलेंडर, जो या तो प्लास्टिक से बनाया जाता है या तो ग्लास से बनाया जाता है, और उसके एक तरफ स्केल रखा जाता है जहाँ से आप रीडिंग पढ़ते हो. ये वर्टिकल स्केल जो लगा हुआ है ये मिलीलीटर में भी हो सकता है और क्यूबिक मीटर क्यूब या मीटर सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है. तो ये आ जाएगा मेजरिंग सिलेंडर. Then you are going to write what is meniscus. So I have already read the definition of it. When a liquid is poured into the cylinder, the volume is read from the scale on the side. So if you are going to calculate the volume of a liquid in this cylinder, then the scale is given aside. This scale which in this scale tells you the volume in milliliter or cubic centimeter. The surface of a liquid curves upward at the point where it touches the inside of a cylinder. This curvature is called meniscus. Okay, then you are going to tell what is the procedure of measuring the volume. So first you are going to note the volume. The volume is noted on the scale in front of the meniscus of a liquid. Then first correct the measurement of a volume. The cylinder must be placed on the horizontal surface and the eye should be kept on the level with the bottom of the meniscus. So आप क्या करेंगे कि इस मेजरिंग सिलेंडर को आपने रखा और फिर आप इस तरह से अपनी आई की लोकेशन करेंगे कि मेनिस्कस की बॉटम से करेक्ट लाइन आपकी निकले वॉल्यूम की. तो आप देखें, अगर आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो आपको लो रीडिंग मिलेगी.
देखिए लो रीडिंग मिलेगी यहाँ से, और अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको हाई रीडिंग मिलेगी, यानी कि आपको ये वाली रीडिंग मिलेगी, और लो देखेंगे तो आपको बॉटम की रीडिंग मिलेगी। तो इसलिए बेटर है कि आपने बीच से बिल्कुल देखना है, बिल्कुल बीच मेनिस्कस की लाइन जो गुजरेगी मेनिस्कस को टच करते हुए, तो वही वॉल्यूम हो जाएगा उस लिक्विड का। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे सपोज अगर 50 है 5, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 बन रहा है, तो ये 5 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम आप कहाँ से कैलकुलेट करते हो, जहाँ से ये स्केल आपने अटैच किया हुआ होता है सिलेंडर के साथ। सो you will going to write exactly same on your notebook, and then you are going to make the diagram of this as well. I hope you will do it correct. Take care. Allah Hafiz.